Composting is one of the methods to make use of leaf litter or any kitchen waste that we get from our day-to-day life. या फिर अपने नाखून, बाल, वो भी हम कंपोस्ट में यूज कर सकते हैं. So in our last video of Get Set Green, I told you how to make compost. पर आज हम ये खुद करके देखेंगे. Hi, I am Arushi and you are watching Fundu Learning System and I am here with the segment Get Set Green. What you need is a container या फिर मटका, और कुछ भी नहीं हो तो आप मिट्टी में एक पिट डिग करके उसमें भी कर सकते हो. बट एरेशन इज मस्ट. मेरे पास एक पुराना कंटेनर है जिसे नीचे से होल्स है, पर बाद में मैं उसे और होल्स बना लूंगी बिकॉज एरेशन इज मस्ट. लेट्स स्टार्ट. पहले नीचे की लेयर में हम वो चीजें डालेंगे जो जल्दी कंपोस्ट नहीं होती है, जैसे कि लकड़ियाँ, कोकोनट शेल, या फिर मेरे पास थोड़े मूंगफली के छिलके भी है. अब जो मेरे पास है उसका कंपोस्ट मैं बना रही हूँ. यह थोड़ी लकड़ियाँ, यह मूंगफली के छिलके, बीच में मैंने कुछ आम भी मंगवाए थे और इसके साथ ये घास भी आ गई, तो हम ये भी यूज करेंगे. और फिर उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी स्प्रिंकल करेंगे. और यही प्रोसेस हम किचन वेस्ट और लीफ लिटर के लिए रिपीट करेंगे. ये लीफ लिटर, और फिर उसके बाद फिर से मिट्टी स्प्रिंकल करनी है. Compost is decomposed organic material such as leaves, grass, and kitchen waste. It provides many essential nutrients for plant growth and therefore is often used as fertilizers. Compost also improves soil structure so that soil can easily hold the correct amount of moisture, nutrients, and air. Compost is also used for reduction in garbage volume, and it also helps to improve soil aeration and drainage. There are some common problems during making compost. If the compost is too wet, turn it more frequently or add dry brown leaf material. If there are rotten egg smell, turn the compost or add brown material to dry it out. Things you should not add in your compost are meat, fish, and animal fats. This material may attract unwanted visitors to your compost. Shredded newspapers. The paper may contain chemicals that are not good for your compost. आप बोकाशी composting भी कर सकते हैं. Bokashi is a process that converts food waste and similar organic matter into a soil amendment, which adds nutrition and improves soil texture. It differs from traditional composting methods in several respects. While doing composting, you can also use biofertilizers. It is a substance which contains living microorganisms, which when applied to seeds, plant surface or soil, it promotes growth by increasing the supply of primary nutrients. आज आपने देखा कि कंपोस्टिंग कैसे करते हैं. Now it's your turn. आप भी कंपोस्टिंग करिए and make your plants healthy just by using your waste. और आपको ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. यह फंडू लर्निंग सिस्टम जहां हम कोशिश करते हैं कि आपको हर बार अमेजिंग फैक्ट्स बताते रहे. सो लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर अपडेट्स.